students, how are you all? Hope you are good. କିଛି ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଛାଡ଼ି ପାରିନାହିଁ ତମର ପାଠ. I was ill. So let's start. Today we are going to read your book 2, third chapter. It's second year. For plus 2 second year, third chapter, third non-detailed story. It is the mystery of the missing cap. Okay. So book बाहर करो पिले जो मन बाहर बुक अच्छी बुक बाहर करो एंड बाय द बाय मैं तुमरो वर्ड मीनिंग्स कहि चली भी जोठी वर्ड प्रॉब्लम होची अंडरलाइन करो एंड द मीनिंग लिखि चलो. ओके ठीक अछि चलो लेट्स मूव टू द टेक्स्ट. मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग कैप. व्हाट डू यू मीन बाय मिस्ट्री? मिस्ट्री माने कोन कहलो बिले जानिचो? इफ यू नो कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स. Mystery means a cause which is unknown to the people. जो मानु को एक cause टी unknown अच्छी, that is mystery. Okay. Mystery of the missing cap. Cap means टोपी. गोटे टोपी हजी जाइची, केमिति हजीची, that cause is unknown to all. A mystery of the missing cap means the cap which was missed and how it was missed, the cause is unknown to all. Right? It is written by Manoj Das. It's very important for us only because he is a writer from Odisha and his district is Baleshwar. Okay. So he was not only a English writer but also a Odia writer also. And basically he deals with human nature. Okay, so let's move to the direct to the text. It is certainly not my motive. It is certainly not my motive in recounting this episode of 2 decades ago to raise a laugh at the expense of Sri Maharana or Babu Birokishwar. It is certainly not my motive. So निर्दिष्ट भावरे एटा मोर उद्देश्य नुहे. It is certainly not my motive to recount. Recount means again remembering. आउ थरे सेई जिंसो को मने पकेबा कौन पाई this episode of 2 decades ago. Decades means 10 year. 10 year को मैं गोटे decade बोली कहूँ. Okay, 2 decades ago. That means before 20 year something happened. It is not my motive to remember these things again on the to raise laugh. हसेइबा पई काहाकु थट्टा मजा करिबा पई मोर एटा उद्देश्य नुहे जे मु सेई 20 वर्ष तळर घटना मने पकेइबी. ओके विथ द एक्सपेंस ऑफ आमे गोटे कॉमेडी शो देखिया को जाउचे हसिया पई जाउचे तो सेठी किछ हमें पैसा देकी जाउचे. दैट इज आवर एक्सपेंस टू लाफ. राइट. सो द राइटर हियर मनोज दास इज सेइंग दैट इट इज नॉट माय मोटिव टू लाफ एट समवन with the expense of इटी खर्च कौन expense कौन expense of Mr. Maharana and Babu Birokishwar. Neither Mr. Maharana not Mr. Babu Birokishwar. एई दुई जन को expense रे हस तयारी करिबा it is not my motive. तार अर्थ एते वर्ष परे 20 वर्ष परे मु कोनोसी गोटे घटना मने पकेया को जाउची किंतु ए दुई जन को मोर हसीबा थट्टा करिबा दिस इज नॉट माय मोटिव. क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट जीवा. देन द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड फाइन आर्ट ऑफ माय स्टेट. सो दुईटी कैरेक्टर वर्तमान तम सहित इंट्रोड्यूस होइचंती. वन इज मिस्टर महाराणा एंड सेकंड वन इज बाबू बीरकेश्वर. So who is Mr. Maharana? Eporjanto we have not introduced with this person, but Babu Birokishwar is the minister of our state. से समय रे बाबू बीरकेश्वर थिले जने मिनिस्टर इन व्हिच डिपार्टमेंट
फिशरीज एंड फाइन आर्ट मत्स्य चाष ए डिपार्टमेंट रे से थिले जने मिनिस्टर हु बाबू वीरकिशोर ओके देन on the contrary I wish my friends and readers to share the sympathy I have secretly nurtured in my heart for these two men over all these years आउ आज 20 वर्ष परे after 2 decades I am going to share with my friends and my students the sympathy the emotion that what I nurtured means पालन पोषण करिबा that is nurtured so मु मो मन भितरे एई दुई जनक प्रति गोटे प्रकार सहानुभूति भाव संवेदनशीलता मु तांको पई मो मन भितरे बांधी की रखिची that I nurtured मु ताको पालन पोषण करी आसुची ए 20 वर्ष हला and today I am going to share these things with my readers and with my students okay so now Sri Maharana now first of all he is going to Sri Maharana was a well-to-do man means a rich person okay so Sri Maharana was a rich man he had only pakka house in an area of 20 villages how much rich he was at that time तांको एरिया रे 20 खंड गाँ भितरे only Sri Maharana was the person who has a pakka house जार की गोटे पक्का घर थिला मात्र okay Sri Maharana he is a well to do man he is a rich man whitewashed on the eve of India achieving independence whitewashed पूरा धोब फर फर दिसुची पूरा धला रंग दिया है से पक्का घरे कौ समय रे जते बेले इंडिया इंडिपेंडेंस पाइबा को जाउची बा पाई सारीची से समय रे कथा व्हाइट वास्ट ऑन द इवेंट ईव मींस बिफोर ओके सो बिफोर ऑफ इंडिया अचीविंग इंडिपेंडेंस सो भारत बा इंडिया स्वाधीनता पाइबा पूर्वरु ए घरटी केमी थिला पूरा चकचक व्हाइट कलर रो and then the house shown as a sort of tourist attraction for the folks of the nearby villages it was a tourist attraction जेमती कि आमे बहुत दूर दूर जगह रे सब आमे जाऊ कोनोसी गोटे प्लेस देखिया पई टूरिस्ट प्लेस एई जो 20 खंड गाँ रो लोक थिले साधारण जनता तांको पई एई पक्का घरटी इट वाज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन से माने जाउथिले केवल सहीटा देसी घरटी देखिया पई ओके देन fox means common man common peoples okay they stopped and looked at in whenever they passed by for none could overlook the symbolism in this operation that had been carried out after nearly half a century जे भी से रास्ता देके पास करूथिले each and every person cannot pass along the road without watching the house सेई जो घरटी को जाउथिबा लोक कि जने न देखि कि पास करके जाई परिबनी all the common peoples they were standing there and watch for a while to the house right and then Sri Maharana had a considerable reputation as a conscientious and generous man ए श्री महाराणांकर कौन थिला had a considerable means remarkable तांकर गोटे भलो ना थिला भलो रेपुटेशन थिला श्री महाराणा had a considerable reputation as a conscientious means who always listens his conscience जे विवेक रो कथा सुने विवेकी मनीष ओके so Sri Maharana had a considerable reputation as a conscientious and generous generous means ready to give something के कोन किछि मागुची he is always ready to give okay so generous man so that means overall Sri Maharana was a good man he has a good reputation he is a well to do man he has a pakka house
and he is also kind to everyone. He was an exemplary host with 2 ponds full of choice fish and a number of well cared for cows. He was a person who has 2 ponds. दुईटी पोखरी बेले थिला आउ कौन तांको पसंदर माछ सब छड़ा हेतिला ता भितरे आउ कौन थिले किछि गाई थिले जो मानकर सुंदर भाबरे जत्न निया होतिला भलो गाई थिले. ओके, सो ही वाज अ हैप्पी विलेजर. नाउ इट्स द पिक्चर ऑफ श्री महाराणा. श्री महाराणा बोली जने लोक थिले. ही इज अ रिच मैन. He is a kind person. He is a good reputation, and he has a pakka house. He has 2 ponds and full with fish and well cared cows. Right? This is the picture of Sri Maharana. Came independence. स्वाधीनतार समय आसीगला. As is well known, the ancient land of India has had 4 major castes from time immemorial. जेमती कि आमे जानिचु बोधे भारतर सृष्टि हवा पूर्वरु भारतर हिंदू सभ्यता सृष्टि हवा पूर्वरु we know that we have 4 castes. 4टी जातिर लोक बसवास करंती हम भारत रे, like ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. Okay, so the writer is saying that as we well known, the ancient land of India had 4 major castes. 4टी मुख्य जाति थिले from the time immemorial. जेबेठु हमें जानिचु मने अछि सेबेठु 4टी जातिर लोक थिले. But during these days, immediately preceding independence, a new caste was emerging all over the country of patriots. एंड एई समय रे गोटे नुआ जाति सृष्टि हवा आरंभ हो गला. कौन से जातिटी थिले? दैट वाज पेट्रियट्स, स्वाधीनता संग्रामी. ओके, ये गोटे नुआ जातिर लोक आरंभ हेले. सेठी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रो कोनोसी परिचय नथिला. ओनली पेट्रियट्स. केवल से माने होचंती स्वाधीनता संग्रामी. दैट इज देयर आइडेंटिटी, दैट इज देयर कास्ट. राइट? देन the 15th of August 1947 gave a big boost in their growth. ई जो जातिटी नुआ करी सृष्टि हेतिले यंकर सर्वोच्च पीक पॉइंट कोठी थिला 15th August 1947. स्वाधीनता संग्राम बा स्वाधीनता पाइबा, भारत स्वाधीनता पाइबार दिनटी को कुहाउची इट इज द बिग इट इज द पीक पॉइंट और द पीक पोजीशन ऑफ दिस कास्ट. ई जो कास्ट तैयारी हेतिले स्वाधीनता संग्रामी एमानकर सर्वोच्च समय को समय रे थिला जो समय रे इंडिया स्वाधीनता पाइला. ओके, देन in almost every village beside the Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudras, a couple of patriots came into being. प्रत्येकटी गाँ रे सेते बेले प्रत्येकटी गाँ रे ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र छड़ा आउ एई जातिर लोक, दैट मीन्स ए स्वाधीनता संग्रामी पेट्रियट्स निहाती भाबरे 2 ରୁ 3 जण निहाती भाबरे थिले. ओके, so this is the picture of this time. It was observed that the small fisheries of Sri Maharana were often exercised in honor of these new people. आउ ए जो स्वाधीनता संग्रामी माने थिले जिए जेते बेले श्री महाराणा को घर को आस्तुले तांकर जो पोखरी, तांकर चर्चा, तांको घर सब बेले से मानक पई रेडी थिला. Always Sri Maharana was ready to just serve his service towards the patriots. से सब बेले राजी थिले. And observers began to notice that Sri Maharana himself was fast becoming a patriot. So Sri Maharana was also a patriot. सी मध्ये जणे स्वाधीनता संग्रामी थिले. As I found later, किंतु परे मु जानिबा को पाइली who is I here? मु किए एठी? मनोज दास. ओके, सो मु परे जानिबा को पाइली he had even nursed the ambition to become a member of the state legislature. परे धीरे धीरे मो अभिज्ञता वृद्धि होगा सहित मु जानिबा को पाइली श्री महाराणा भितरे गोटे इच्छा रखिथिले. से तांकर आ गोटे इच्छा को भितरे रखिथिले. कोन सेटा? he wants to be a member of
state legislature. Okay, now the incident I know relate occurred at the outset of his endeavor in that direction. So all these things he is doing, the direction is towards to be a member of state legislature. এই ସବୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଭିତରେ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଜଣେ politician ହେବେ or member of state legislature se hebe. Then what happens? I witnessed the incident as a small boy in my maternal uncle's house, which I frequently visited, being just near Sri Maharana's. Manoj das eita kemti janiyaku paile. Beside Sri Maharana's house, Sri Maharananko ghara pakhare, it was the house of Manoj das uncle. Manoj dasankar mamu ghara sethi thila. तो सी सेते बेला गोटे छोट पिला जते बेले एई सब घटना घटु थाए 1947 कथा हम जते बेला कहूछु at that time Manoj Das was a small boy and he witnessed a incident happened in Sri Maharana's house. तांको घरे गोटे इंसिडेंट घटितिला जोटा कि ये ही देखितिले. He was the only one witness. Okay, at that time Manoj Das was a small boy. When I narrate it, I do so naturally with the understanding which has matured in me with time. जो जिनस what I am going to describe, जहाँ जी कहिबा को जाउची, it was just inside me a long time, before a long time, it was 20 years ago. And it was also, that incident was also matured within me. आज मु जोटा नेरेट करिया को जाउची ये मध्य मो भितरे भितरे 20 वर्ष भितरे मैच्योरिटी पाई जाईची. ओके, सो नाउ इन दोज अर्ली डेज ऑफ स्वदेशी मिनिस्टर्स देयर वर नो डेप्यूटी और सब डेप्यूटी मिनिस्टर्स. एबे जेमते डेप्यूटी सब डेप्यूटी मिनिस्टर ये सब किछि नथला. ओनली सिंगल हैंडेड पर्सन वाज देयर इन पावर. In those early days of Swadeshi minister, there was no deputy or sub-deputy ministers. All were full-fledged honorable minister. All the people who were minister, they are just full-fledged minister. Okay. And Babu Virokishwar. Now come to Babu Virokishwar. Okay. These above all the things were all about Sri Maharana. And now it's the time of Babu Virokishwar. Okay. And Babu Virokishwar, who held the portfolios of fisheries and fine arts. Babu Virokishwar was the minister of fisheries department. Matsya Chasa Vibhagar Mantri thile je. So the heads of portfolios means department, okay, of fisheries and fine art held from our district. Aji ammo district re eta houtila. The sponsors of Sri Maharana thought, who is the sponsor here? Sri Maharana, because he was a well-to-do man, he was a rich man. Two, it's proper that the debut into politics should have the blessing of Babu Virokishwar. तांको भितरे जो इच्छाटे अच्छी भितरे भितरे, he wants to be a minister, he wants to be the politician. It is the proper time because Babu Virokishwar is coming to our district, and I got the opportunity to sponsor these things, and it's the proper time. I can capture Babu Virokishwar and I can enter through Babu Virokishwar to politics. Right? Okay. In those days, ministers' daily life was largely made of speech making at public receptions. एबे मंत्री मानकर हुई तो काम किछि न थाई पारे, हमें कहि तो परिबेनी, हमें जानिनु, but nowadays this is happening. But से समय रे कोन होतिला, all the time the ministers were busy in public meetings. प्रत्येक समय रे 80 public meetings होतिला आ से माने जे कि प्रेजेंट रहउतिले एंड लोकन को सहित कथा वार्ता एंड स्पीच all that things ई सब थिरे तांको दिन बीती जाउतिला. A reception was arranged for Babu Virokishwar with Sri Maharana as the chairman of reception committee. So Sri Maharana was the chairman of reception committee.
जेकोसी फंक्शन पार्टी किए जने पेट्रोइट्स आसिले तांकर रिसेप्शन करिबा पई तांको स्वागत संबर्धना करिया पई बाबू वीरकिशोर से कमिटी रो चेयरमैन थिले सॉरी श्री महाराणा एंड बाबू वीरकिशोर जेतेबेला आसुचंती आज तांको गां को श्री महाराणा से रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ सब किसी अरेंजमेंट श्री महाराणा करूचंती ओके देन Sri Maharana's huge ancestral cane chair was laid with a nylon cover, upon which the best village sea mistress had laced a pair of herons with two big fish in their beaks. So बाबू वीरकिशोर बर्तमान बसचंती कोठी तांको घरे गोटे बड़ लंबा चेयर अछि एंसेस्ट्रल चेयर लाइक आराम चेयर जो गुड़ा आम कहूँ काठरे तैयारी आउ लाइलन रे बुणा होइथिबो सेई चेयर रे बसिचंती देयर इज ए कवर गोटे कवर लागिची लाइलन कवर टे लागिची जोटा कि तांको गां रो दर्जी बनैची एंड देयर वाज आल्सो ए टू हेरन्स दुईटी बग पक्षी अछंती आउ तांको थंटरे माछ अछि ओके सेई चित्रटी तांको दर्जी बनैची से कवर रे सेमती गोटे चेयर रे से बसिचंती then what happens for a fortnight every day the children of the village lower primary school devoted the afternoon to the practice of the welcome song प्रत्येक दिन ऊपर बेलाटा कौन हेची ए जो छोट छोट पिल्ला माने प्राइमरी स्कूल लो पिल्ला माने they are coming to Sri Maharana's house and they devoted all the afternoon to in practicing the welcome song practice करूचंती प्रत्येक दिन ऊपर बेला okay then among the many strange phenomenon wrought by the great spirit of the time was a composition of the song for the composer the head pandit of the school had lived 67 years without any poetic activity ए जो पिला माने वेलकम सॉन्ग गाउचंती who composed that song the head pandit जेटा को हेड पंडित थिले सी तांकर बयस कते 67 okay so had lived 67 years oh sorry just he was how much age it is not mentioned but before 67 years he never composed a poem दीर्घ 67 वर्ष हे गलानी से एपर्यंत गोटे भी कविता लेखि नाहंती आज प्रथम थर पई गोटे वेलकम सॉन्ग लेखिचंती जो गीतटी को पिला माने डेली प्रैक्टिस करूचंती बाबू वीरकिशोर मंत्री आसीबे गां को and the children will sing this then had lived 67 years without a poetic activity the refrain of the song still raises echoes in me the refrain means the मुखड़ा में जोटा को repeated line okay तारो मुखड़ा से गीतर आज भी मो कान रे बाजुची its literal translation would be actually तार तो मुखड़ाटा से कहू नाहंती से कहउचंती तारो जो अर्थटा थिला लिटरल मीनिंग दा थिला कोन थिला ओ माइटी मिनिस्टर टेल अस हाउ डू यू नर्स दिस लॉन्ग ए ब्रॉड यूनिवर्स ओ माइटी मिनिस्टर हे शक्तिशाली मिनिस्टर टेल अस कुहंतु निश्चित भाबरे कुहंतु हाउ डू यू नर्स दिस लॉन्ग एंड ब्रॉड यूनिवर्स केमिति आपण ए विराट विश्व को आपण लालन पालन करूचंती आपण कुहंतु दिस इज द रेफरेंस ऑफ द वेलकम सॉन्ग The rest of the song catalogued the great changes nature and humanity experienced on the occasion of the minister coming, how the sun almost blazed in romantic happiness that morning. आउ जो रेस्ट पार्ट रही गला व्हाट इट एक्सप्लेन्स ये कौन एक्सप्लेन करूथिला ए गीतटीर हाउ डू द सन ऑलमोस्ट ब्लास्ट देखो आज सूर्य केते सुंदर चमकुचंती तांको मुहरे को उज्जवलता इन रोमांटिक हैप्पीनेस इन दैट मॉर्निंग सेई संध्यारे सेई सकाळरे आज सूर्य केते भलो भाबरे देखा जाउचंती केते उज्जवल दिसुचंती हाउ रोमांटिक हैप्पीनेस देयर इज ए रोमांटिक हैप्पीनेस इन सन okay how each and every bird recited the particular raga आज एई सबु पक्षी माने समान गीतटी आज गाई चली चंती गोटे समान राग गाई चली चंती and with what eagerness and throwing of heart the women folk waited to blow their conch shells when the minister stepped into the village
आपण आज आसीचंती बोली आम गाँव स्त्री लोक मैंने एते खुशी से माने खुशी रे शंखनाद करूचंती. इट वाज द मीनिंग ऑफ द वेलकम सॉन्ग. जो वेलकम सॉन्ग टी प्रिपेयर करा हैतिला तार मीनिंग एया थिला बोली आज मनोज दास कहउचंती. ओके देन आई नो दैट नाउ डेज मिनिस्टर्स डू नॉट एंजॉय सच ग्लोरी. मु तो एक कथा निश्चित कहबी आजिकल जो मंत्री माने आसुचंती को गाँ को गले को फंक्शन को गले से माने बोधे एई सौभाग्य तांकर नथिला. जो सौभाग्य सेते बेलर मिनिस्टर मानकर थिला सेते बेले तांकु जो सम्मान दिया जाउथिला बोध हुए मु तो कहबी आजी सेई मंत्री माने से सौभाग्य तांकर नाही. बट इट वाज वेरी डिफरेंट देन. सेते बेले जिंस बहुत अलग थिला बहुत गोटे अलग प्रकार. देयर वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ चार्म एट दैट टाइम. We the rustic childrens, rustic means kind of uneducated gauli pila am kahi pariba. We the rustic children, Manoj Das himself included with the children of the village. Okay, so we the rustic children wrangled over several questions. Wrangled over, we argue. परस्पर भितर आमर विभिन्न प्रकार जुक्ति तर्क चली आम पिला लोक आम जो थिलु जेतिकी छोट पिला आम भितर विभिन्न प्रकार क्वेश्चन आसीथिला. कौन से क्वेश्चन गुड़िक थिला व्हाट डज मिनिस्टर ईट. दे थॉट दैट मिनिस्टर इज ए काइंड ऑफ पर्सन हु इज ए गॉड. सो द क्वेश्चंस बिटवीन द चिल्ड्रंस आर पिला मानक भितर कौन क्वेश्चन थिला अच्छा मिनिस्टर कौन खाउथिबे. ही इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग ना. सो से कौन खाउथिबे व्हाट द मिनिस्टर ईट व्हाट डज ही थिंक से कौन भाबुथिबे आम भलिया किछि भाबुथिबे ना से ही इज मिनिस्टर ना. सो व्हाट ही इज थिंकिंग डज ही स्लीप और नॉट से सुवंती मिनिस्टर सुवंती ना नहीं. ओके दिस वाज द क्वेश्चन बिटवीन द चिल्ड्रंस. डज ही एवर सफर फ्रॉम कॉलिग्स और कोल्ड्स तांको केबे आम को जेमती ठंडा ज्वर भल मंद हुए मिनिस्टर को होथिबो सेमती. This is the question between the childrens, the rustic childrens. Okay. See, Maharana himself was hectically excited. Hectically excited. Sri Maharana जो थिले, सी मत बहुत excited थिले with feelings of nervousness. भीषण मात्रा नर्भस अछंती एवं एक्साइटेड मध्ये अछंती. मंत्री आछंती गोटे बड़ कथा कोठी कोन सुविधा असुविधा न हे जाऊ. Okay. And then he used to sleep for a full hour in the afternoon. से प्रत्येक दिन ऊपर बेला घंटाए निश्चित भाव में शुअंती. बट ही गेव अप दिस हैबिट एट लास्ट 10 days प्रायर टू द रिसेप्शन. किंतु जेबे रिसेप्शन टी थिला जेबे बाबू वीर किशोर आसीबे ता 10 दिन पूर्व बोधे से टोटल सोई नाहंती. ओके ऑल हिज टाइम पास्ड इन एग्जामिनिंग एंड री एग्जामिनिंग द डिटेल्स ऑफ द अरेंजमेंट्स. तांको समय कोथरे बितुला बाय एग्जामिनिंग थरटे परीक्षा निरीक्षा करके देखि दउथले एटा ठीक अछि सेटा ठीक अछि सेटा ठीक अछि एंड री एग्जामिनिंग. अच्छा हैला तो आउ थरे देखि दिया हैला कि न हैला. आमे जेमति डोर गुटे बंद करके जाऊ देली ना नाही आउ थरे देखि आसे एग्जामिनिंग री एग्जामिनिंग. ओके सो द अरेंजमेंट ठीक भाबरे चली छि ना नाही ही इज जस्ट एग्जामिनिंग एंड री एग्जामिनिंग. एंड देन yet he seemed nervously uncertain. भारी नर्वस मध्ये थिले. Sri Maharana, he was also excited and nervous, right? So this is the first unit. What happens in the first unit? First of all, here the writer is describing some experience of his childhood, and it is before independence, and it was the time of before independence and sometime after independence. That means the time was 1947, right? And he is saying that it was the experience of my childhood which I nurtured for 20 years. And now I am going to describe these things, but my motive is not to criticize something or make a laugh on them. No, it's not. But to just share with my students and my readers the thing happened, the incident happened before 20 years. Okay, now then he introduced two characters, Sri Maharana and Babu Virokishore. Sri Maharana is a rich man, a well-to-do man who has a pakka house. At that time pakka house is a kind of great thing. The person who has a pakka house, that means he is a very rich man. And 2 ponds with full of fishes.
दुईटी पोखरी अछि पूरा माछरे भर्ती होइछि एंड आल्सो काउस वेल केयर्ड काउस भलरे जत्न निया होतबा गाई अछंती एंड एट दैट टाइम one more caste was there except Brahmin Kshatriya Vaishya Shudra there was one more caste that is patriots and all the time the door was opened for the patriots by Babu Virakishwar. And now the writer is saying that a secret ambition was there inside Sri Maharana. He wants to be a member of state legislature. And it's the time when Babu Virakishwar was the Minister of Fishery Department is coming to their state. And Sri Maharana thought that it's the proper time when through Babu Virakishwar I can enter to politics. And because of that, before reception, Sri Maharana arranged a grand reception where the pre-primary students are practicing welcome song, and after that there was a different kind of atmosphere. That means all are excited and the rustic children, they have a different kind of questions with each other, as like the minister is not a human being but a god. And at last Sri Maharana was excited and nervous also. It is the first unit. In the second unit ame dekhiba मंत्री बाबू वीरकिशोर पहुंची ना पहुंची नाहंती what happened we will see in the next unit. I think the video will go long if I will move to unit 2. Okay, next video रे हमें unit 2 रे discuss करिबा. Okay, thank you, have a nice day.